सो वेलकम टू दिस चैनल एन। तो मैं एक वीडियो में आप लोग को शो कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे देखिए टॉपिक में क्या लिखा गया है। मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूँगी, आप लोग देखते रहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया stands at the apex of the judicial system of India. Article 124 states the establishment of Supreme Court. At present, it consists of one Chief Justice and 30 other judges. Appointment. The senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. Other judges are appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and of the High Courts as the President may deem necessary. ये जो सारा टॉपिक है उसको बार बार रीड करना है एक पॉलिटी किताब खरीद के। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशंस: सिटीजन ऑफ इंडिया, have been a judge of High Court for 5 years or an advocate of High Court for 10 years minimum or in President's view a distinguished jurist of the country. तो जैसे कि ये मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में है, तो यूपीएससी पेपर में एग्ज़ाम में क्या आएगा, इसी से ये क्वालिफिकेशंस दिया रहेगा स्टेटमेंट के जैसा, उसको आप लोग को टिक करना है। तो ये जो सारा चीज़ है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा गया है। The Chief Justice and other judges hold office till 65 years of age. After retirement, a judge of Supreme Court cannot plead or act before any authority. Resign his office by writing to the President. His oath is administered by the Chief Justice of the concerned state High Court and in his absence, the senior most judge. The governor shall hold office during the pleasure of the President. Next, removal of judges. A motion seeking the removal of the judge can be presented before either house of the parliament. Next, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छा से? Jurisdiction, okay. Original jurisdiction, okay. The Supreme Court settles all disputes between center, state, etc. Right jurisdiction. Every individual has the right to move the Supreme Court directly by appropriate proceedings for the enforcement of his fundamental rights. Appellate jurisdiction. The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of the lower courts. Advisory jurisdiction. The Constitution Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court. It is duly bound to give its opinion. तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट में और लेके आऊँगी वीडियो।